Subscribe to our YouTube channel, Edelweiss Mutual Fund, and click on the bell icon for notifications. Hello and welcome back to this episode of Market Talks. My name is Varun Sanan, and our endeavor from Edelweiss Mutual Fund has always been to come with topical subjects from every now and then and give you an update on what is happening in terms of markets, in terms of the economy, etc. And today I have with me our fixed income CIO, Mr. Dhawal Dalal. Dhawal has been in the industry for over 25 years and has a vast experience of the fixed income market. और आज हम सबसे पहले ट्राई करेंगे समझना कि ये फिक्स्ड इनकम मार्केट है क्या. अगर आपको याद होगा, इन द पास्ट वी हैव डन दी सीरीज ऑन इक्विटी मार्केट्स यानी कि शेयर बाजार, बट आज हम कोशिश करेंगे एक दूसरे साइड पे जाने की और एड्रेस करेंगे फिक्स्ड इनकम मार्केट्स. धवल, इक्विटी मार्केट सबको समझ आता है, शेयर मार्केट सब ट्रैक करते हैं ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, एंड मार्केट्स ऊपर जाता है, मार्केट्स नीचे जाता है, पीपल नो व्हाट इज गोइंग ऑन. बट व्हाट एग्जैक्टली इज फिक्स्ड इनकम? क्या है फिक्स्ड इनकम? Varun, first of all, thank you very much for inviting me on your talk show. Thank you. The fixed income market is an American term. उसको bond market भी बोला जाता है, जैसे stock market and bond market. Now, in terms of size, the bond market is very, very big. It's like probably 3 times bigger than the equity market's global market cap. So, एकदम 3 गुना बड़ा है. और वो it's everywhere. आज आप लोग अगर शायद फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिक्स्ड इनकम मार्केट. लोग पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस, पेंशन फंड, आपके जहाँ जहाँ पे भी लोगों के इन्वेस्टमेंट्स है, दे ऑल क्लासीफाई एज ए पार्ट ऑफ द फिक्स्ड इनकम और द बॉन्ड मार्केट. बिल्कुल. और द वर्ड फिक्स्ड इनकम सजेस्ट दैट देयर इज अ फिक्स्ड टाइप ऑफ इनकम कमिंग टू यू. सो आज आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट, अगर उसका सपोज ब्याज का दर है 60%, तो एवरी 100 रुपीज़ पे आपको एवरी ईयर 7 रुपीज़ आता है. सो दैट्स अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ इनकम दैट यू विल रिसीव. सो इस शायद उसकी वजह से उसका नाम फिक्स्ड इनकम पड़ गया है. बट अभी आज के दौर में जैसे एवरीथिंग इज मार्क टू मार्केट, सो अदर देन दोज पोस्ट ऑफिस एंड बैंक डिपॉजिट्स, मोस्ट ऑफ द अदर इन्वेस्टमेंट्स आर मार्क टू मार्केट. सो क्या होता है मार्क टू मार्केट? मार्क टू मार्केट का मतलब होता है उसकी वैल्यू पे उसको डेली बेसिस पे मार्क करना. तो उसकी वजह से फिक्स्ड इनकम की वैल्यूज ऊपर नीचे होती रहती है, इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू. उसकी वजह से लोगों को लग रहा है शायद कभी कभी ये फिक्स्ड इनकम क्यों उसको बोला जाता है. तो इसलिए ब्रॉडली वी ऑल्सो कॉल इट ए बॉन्ड मार्केट. सो फिक्स्ड इनकम जो मुझे समझ आ रहा है, जो आपको एक फिक्स्ड इनकम साल के एंड में जनरेट करके दे या एक फिक्स्ड टाइप की इनकम जनरेट करके दे, उसको फिक्स्ड इनकम कहते हैं. और एक तरीके से वो भी सही है. दूसरा तरीके से देखा जाए तो फिक्स्ड इनकम मार्केट या बॉन्ड मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी कम रहती है. काफ़ी कम रहती है. जैसे इक्विटी मार्केट का वॉलेटिलिटी कभी कोई साल में आपको 10% रिटर्न दिया, 20% रिटर्न दिया. अभी लास्ट ईयर तो लोगों को 30% रिटर्न भी आया है. There have been time period where the returns have been negative also. Yes. So as compared to those type of volatility in equity markets, bond market volatility is little subdued. A little more stable than equity. But the most important part that in my mind is that bond market works 24/7. जैसे equity market आज की तारीख में देखा जाए तो हफ्ते में 5 दिन चल रहा है, Monday to Friday. There is no Saturday Sunday market open in India. Bond market works every single day. So आपका जो accrual होता है डेली, जी, वो 24/7 होता है. उसमें कोई हॉलीडे नहीं होता है, कोई बीच में गैप नहीं होता है. सो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड. अंडरस्टूड. सो हमने देखा कि पिछले 4-5 साल में थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट ग्लोबली. वी हैड कोविड दैट केम थ्रू, एंड ड्यूरिंग कोविड व्हाट वी सॉ वाज अ लॉट ऑफ governments across the world did this very big stimulus, starting with the US. India did not do a financial stimulus, but India did a different kind of stimulus. Job creation पे बहुत ज़्यादा focus आया so that people's earnings go up. Now, a lot of that has changed after COVID because interest rates were quite low during COVID, and interest rates changed course, and we saw interest rates go very, very high now. So, what exactly has happened in the last 2, 3, 4 years?
So Varun, I think this is very important question because what's happening now with Indian economy is also linked to what was happening pre-COVID. Yes. So if I could just rewind and go back to pre-COVID. So pre-COVID में क्या चल रहा था कि इंडिया में food inflation was very high and economy was slowing down. What is inflation, Dhawal? Inflation is the change of price. Okay. So आज अगर आपको एक चीज़ 100 रुपये में मिल रही है और अगर उसका दाम एक साल के बाद 110 रुपया हो रहा है तो वो 10 रुपया इज कंसिडर एन इन्फ्लेशन अंडरस्टूड और प्राइस इंक्रीज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. तो जब प्री कोविड 2019 में हम लोग देख रहे थे कि इंडिया में फूड इन्फ्लेशन वाज गोइंग अप, दैट मीन्स खाने की चीज़ों के दाम बहुत ऊपर जा रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इट वाज स्लोइंग डाउन. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया सेंट्रल बैंक took a call that slowing economy is far more dangerous for India's economic perspective and investors' perspective. So they were cutting rates. And उसके बाद कोविड आ गया. कोविड was extremely unexpected. And उसके चलते there were lockdowns. There was a first lockdown and there was a second lockdown. और लॉकडाउन में ऐसा हो गया कि लोग का घर बाहर निकलना मुश्किल हो गया. बिल्कुल. और उसके चलते लोगों की आमदनी कम हो गई और खाने के लोगों को प्रॉब्लम्स हो गए. तो डिफरेंट इकोनॉमीज रिएक्टेड डिफरेंटली. यस. सो यूएस ने ऐसा डिसाइड किया कि लोगों को वो फ्री में अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. सो दे स्टार्टेड गिविंग समथिंग कॉल्ड फिस्कल स्टिमुलस एंड बाय गिविंग फ्री मनी टू पीपल. अभी इंडिया की सिचुएशन तो वो थी नहीं और जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ वाज स्लोइंग बिफोर एज वी एंटर्ड इनटू कोविड. तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कॉन्शियस कॉल लिया कि हम लोग कोई फिस्कल स्टिमुलस ज़्यादा नहीं करेंगे, बट लोगों को थोड़ा जिसकी ज़रूरत है वो फ्री में फूड सप्लाई शुरू किया. इनिशियली इट वाज टेम्पररी. So Dhawal, we keep hearing about economic growth, GDP, we keep hearing about inflation. How do they impact the fixed income market or fixed income returns? So Varun, I think this is a very important question. The economic growth is the foundation through which economies grow their total output. So in simple word, economic growth is a measure of your output every year, right? Yes. And for India's perspective, I think the economic growth has to be between 6.5% to 7%. The ideal economic growth. That's correct. Prior to COVID, this economic growth was actually stagnating. And when your economy is growing at a below potential level, right, what it creates is that it is not generating enough wealth for people to earn and to spend. And when the economy is also not growing, corporate earnings decline, government's tax revenues are lower based on all this kind of thing. So overall, it is not a happy outcome. Correct. Okay. Now post-COVID and subsequent to whatever measures have been taken, India's economic growth is now averaging above 7%. And this is something is very, very good because it's visible growth is taking place because at 7% plus, corporates tax revenues are increasing. The individual tax collection is increasing, also compliance level is also going up, and government is consistently raising tax revenue above the target. That's correct. So economic growth is actually working out quite favorably for India, and because government gets more money, they spend more money on capex and other kind of things, and it's a distribution of wealth that is taking place. Now, inflation is a very crucial component of the growth because growth होते हैं ना, दो टाइप के ग्रोथ होते हैं. जो हम लोग मेजर करते हैं एक रियल ग्रोथ होता है जी. राइट, जिसको इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट हटा के मेजर किया जाता है. Not adjusted for inflation. एग्जैक्टली, बिकॉज आज आप कोई भी चीज़ का भाव बढ़ा दो तो आपका ग्रोथ हो गया. Correct. बट वैसे नहीं गिना जाता. राइट, ग्रोथ हैज टू बी काउंटेड एज योर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज. करेक्ट. सो एक ग्रोथ होता है जो रियल ग्रोथ होता है जिसको विदाउट इन्फ्लेशन काउंट होता है, दैट इज व्हाट मेजर मैटर्स. और दूसरा उसमें इन्फ्लेशन ऐड करके नॉमिनल ग्रोथ देखा जाता है. बिल्कुल. नाउ आज कोई कंपनी का अर्निंग 15% बढ़ गया तो उसमें लोग देखते हैं कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ की हुई 7% और आपका ग्रोथ हुआ है 15%, तो ये 8% क्या है? इज इट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन? आपने चीज़ों के भाव बढ़ा दिए. तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इज विथ इन्फ्लेशन and real GDP growth is without inflation. So this is something to keep in mind. और इंडिया के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो right now what is the ideal level of inflation is something between 4%
to 5%. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट है इन्फ्लेशन को 4% के पास रखना, पर हम लोग के बॉन्ड मार्केट की तरफ से आप देखेंगे ना, तो इन्फ्लेशन इज लाइक अ सॉल्ट इन योर फूड. यू कांट हैव टू लेस एंड यू कांट हैव टू मच. द आइडियल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन और बॉन्ड मार्केट्स परस्पेक्टिव इज 4 to 5%. Understood. So inflation is basically prices ऊपर जाना, and growth is real growth is inflation हटा के the growth of businesses, companies, economy, etc. So what government of India is trying is आज 60% रियल ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं जी. और अगर आप इन्फ्लेशन 5% ऐड करते हैं एवरेज तो 12%. So nominal GDP growth is about 12% that is being targeted. Understood. And उसको चलते कॉर्पोरेट्स अपना ग्रोथ देखते हैं कि भाई रियल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इज अबाउट 12%, सो आई शुड डू बेटर देन दैट. सो नॉर्मली कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैव टू ग्रो बाय 12 to 15%. तो आपने थोड़ी देर पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यू मेंशन विच इज़ दैट इंडिया वाज स्लोइंग डाउन प्री कोविड. बिफोर वी गॉट इनटू कोविड, इंडिया वाज ऑलरेडी स्लोइंग डाउन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ. नाउ we all know what happened during COVID. There was a virtual lockdown of everything. And to come out of that lockdown, a lot of stimulus had happened globally. US did their stimulus by payroll protection program or direct cash transfers. India did their different kind of stimulus. And from there, we have come a long way in the last 4 years. The world has completely forgotten COVID. Dunia khul chuki hai. Activity has resumed to level above pre-COVID levels. And there is a lot of growth happening. Now, what all has changed in the fixed income market in those last 3-4 years? So COVID was a big turning point for everyone, right? So nobody anticipated that COVID would strike and then it will have wave 1 and wave 2. But that COVID had a profound negative impact on the aggregate output of all the countries. इंडिया का जीडीपी पहले साल 8% गिरा था, Correct. which was unexpected. और उसके बाद it's been growing at a rate of about 8.5% to now 7.5% right now. So अगर आप प्री कोविड जीडीपी का एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं कि जो बिफोर कोविड इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ हो रहा था और उसके ऊपर जो ट्रेंड लाइन खींचेंगे ना, अभी आई कैन से दैट नाउ वी हैव मैच्ड दैट ट्रेंड लाइन. सो हम लोग गिरे, उसके बाद वी आर ग्रोइंग रैपिडली. सो नाउ दैट ग्रोथ इज नाउ मैचिंग द ट्रेंड. We are back on track is what you're saying. And in terms of government spending, we are above that trend because government has been spending money on creating infrastructure, roads, ports, defense. As you can see, the entire India has been dug up. Metros, ports, everything is being constructed. So government spending is going berserk. And without spending too much money, it's a productive use of capital formation in my view. Private capex is still below the trend, which is what companies and the private sector spends money. So that is going below the trend. Now, in terms of the impact of COVID on interest rates, so जब COVID आया and because of the lockdown, one of the things that all the central banks decided to do was to cut rates. So US economy was the first to get impacted. उन लोगों ने अपना रेट 5% से नीचे एकदम 0 तक लेके आए. बिल्कुल. Whereas in India, we were pre-COVID, we were going at close to about 6%. We brought our rate down to 4%. But actually, because of the surplus liquidity and other thing, it felt like we were closer to 330. So that about 270 basis point decline in rates. Now, because of the excessive injection of liquidity during COVID time, after a certain point of time, people started spending money. Yes. And that led to inflation. So the price started trending higher. And then later on we had Russia-Ukraine crisis, which pushed the oil prices back to $140. So combination of these factors resulted in inflation trending way above the comfort of the central banks. That's correct. Now initially everyone thought that this is transitory, this inflation is transitory. Then they realized that it's too late. Now inflation is not transitory, but there are structural changes that have taken place because of COVID. क्या हुआ, लोगों ने अर्बन सिटी में रह रहे थे, they started moving back to suburb, buying homes, buying cars, looking for ways to work without being part of the mainstream. All that created structural changes in inflation. तो inflation जब बढ़ने लगा तब then central banks caught themselves off guard. So there was a rapid increase in policy rates to curtail inflation. So US, which was zero bound, had hiked the rates, policy rates significantly to close to about 5 quarters.
In India's case, we were at 4% policy rate, now we are at 6.5%. So we had a very shallow increase in rate hikes as compared to what we have seen in the global markets. But the fact of the matter is that the policy rates are higher. Can you explain a little bit more about what MPC is and how does it really impact in the long term? So this is a very important question, Varun. So Monetary Policy Committee meeting, they meet every 2 months. Now this is a very recent formation as compared to the 90 years of history of the Reserve Bank of India that we just celebrated, right? So in 2013, the Monetary Policy Committee format was accepted. Prior to that, it was RBI's call कि उनको क्या लग रहा है. Now, by introducing Monetary Policy Committee in which there are 3 members from the Reserve Bank of India and there are 3 external members who are domain experts. And they meet every 2 months to assess the state of India's economy. And उसमें लोग 3 दिन मिलते हैं और उसमें they look at various factors impacting India's economic growth. इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, लिक्विडिटी कंडीशन क्या चल रही है, गवर्नमेंट बोरोइंग कैसा चल रहा है, ग्लोबली क्या क्या फैक्टर्स इम्पैक्टिंग बॉन्ड मार्केट्स एंड एक्विटी मार्केट्स, फंड फ्लोज क्या चल रहा है, एंड फॉरवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या दिखा रहे हैं, ये सब का मुआवना होता है. एंड बेस्ड ऑन दैट देन दे विल डिसाइड वेदर द प्रेजेंट टर्म स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिसी रेट इज इट appropriate or it needs tweaking. So this is what is the model of the Monetary Policy Committee meeting. Now similar model in the US is slightly different. They tend to give guidance to the market in terms of what is going to happen going forward. And this guidance is sometimes very highly appreciated by financial markets because Correct. it basically tells them which way the monetary policy is going to lean. अभी आज की तारीख में फेडरल रिजर्व विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द यूएस, उनका गाइडेंस है कि रेट कट किए जाएंगे. So Dhawal, you've been in the last 5 minutes spoken about rates a lot. Now I'm an investor. ये rate, how does it impact me? What is rate for me? So policy rate is sort of like a guidance that the central banks is giving to investors. When the policy rates are reduced, that is a signal to the lenders that they should start reducing rates. And वो ऐसा है ना, जब आप गाड़ी चलाते हैं ना, ऑटोमेटिक गाड़ी, तो उसमें 2 पैडल होते हैं, एक एक्सीलरेटर होता है, एक ब्रेक होता है. तो जब इकोनॉमिक कंडीशंस आर स्लोइंग डाउन, the central banks have to take a precautionary measures before that thing happens. So in anticipation of economic slowing down, central banks क्या करते हैं कि वो एक्सीलरेटर पे प्रेशर करते हैं और एक्सीलरेटर का मतलब उसको रेट को रिड्यूस करते हैं. तो that way they are signaling that by reducing the cost of borrowing I am stimulating the economy. एक दूसरा लीवर होता है, वो लिक्विडिटी का लीवर होता है. सो जब इकोनॉमिक कंडीशंस आर स्लोइंग डाउन, रेट्स को भी रिड्यूस किया जाता है और लिक्विडिटी को भी ज़्यादा इंजेक्ट किया जाता है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द इकोनॉमी गेट्स स्टिमुलेटेड, मोर मनी इज अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग एट अ लोअर रेट. So basically to understand this a little more, once rates come down, as an individual, my willingness to save will reduce a little because rates कम हो गए तो मैं save करके उसको बचा के कम रेट पे मुझे interest मिलेगा. So my willingness to spend will increase. Is that what you're trying to say? सेंट्रल बैंक क्या करते हैं? सेंट्रल बैंक का जॉब है कंजम्पशन और जीडीपी को सपोर्ट करना. अभी इंडिया के केस में कंजम्पशन इज ऑलमोस्ट 60% ऑफ जीडीपी. सो इट्स वी आर कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी, राइट? तो कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए दे हैव टू डू कपल ऑफ थिंग्स लाइक ब्रिंगिंग डाउन इंटरेस्ट रेट लेवल सो दैट पीपल हु आर बोरोइंग मनी टू बाय होम्स, बाय कार्स, whatever they want to do, their cost of borrowing is reduced, and as a result of that, the consumption will decrease. Now, conversely, when the economy is picking up very fast and the inflation in the economy is going above the RBI's comfort or central bank's comfort, one of the levers that they will use is they will start signaling rate increases. So they will reduce the amount of liquidity which is available in the banking system. That's the first signal. And second thing, they will start raising rates. And this is what central banks normally periodically signal to the consumers and the investors that what do they think about the state of economy and how they want to ensure that with the right amount of policy rate,
the optimal GDP growth is achieved. So that means that all of these decisions are taken during the RBI's MPC meeting, which is the Monetary Policy Committee, which gathers every now and then and decides the further course of action in terms of interest rates. Exactly. So Dhawal, आपने समझाया how it happens in RBI in India. How does it happen in the US Federal Reserve? Do they follow the similar procedure of deciding on interest rates and way forward? How does it work there? So this is a very important question. So US being the powerhouse of the world, the US central bank assumes a lot of significance. So Federal Reserve, they meet 8 times a year, okay, and उनका जो decision होता है, it has a profound impact on the financial markets. One of the most important thing that they do is, apart from meeting, they also give forward guidance, which is very very valuable for the financial markets. आज की तारीख में आप देखा जाए तो फेड ने ऐसा गाइडेंस दिया है कि they are going to bring down interest rates 3 times a year in 2024 and 2 more times in 2025. So the financial markets adjust their future rate policy rates based on what the guidance is given by the Federal Reserve. India के केस में MPC, when they meet and they declare the results, they don't give forward guidance. Okay. This is something that's different as compared to the US Federal Reserve. Understood. So far we've covered what is inflation, what is growth. We've also understood कि COVID के time पे क्या हो रहा था and where have we reached 3-4 years hence. Now I think let's come into the more interesting part of the conversation. Since we've set up the backdrop, हमने लोगों को थोड़े से nuances of the fixed income market explain कर दिए हैं. Now let's jump into the next few months or the year ahead. And I can't find a better way to pick this up because what we have around the corner are the Lok Sabha elections. So Lok Sabha elections are in front of us. There are a lot of political views that are coming forth. But without getting into too much politics, how do you think this will impact India's interest rate going forward? See, more than election, I think bond market is more attuned to the fiscal policy of the government. Exactly. Okay. Now, before the Lok Sabha election, I mean, which is what is going on right now, what the government has demonstrated is that they are very responsible in terms of managing the fiscal deficit. Prior to the election, there were anticipation that the government will come out with some freebies because elections are around the corner. However, the government has proved that they are not succumbing to any kind of temptation to win votes. This is a very good signal from a fiscal prudence perspective. And जो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट है और इसको बजट डेफिसिट भी बोला जाता है, दैट बेसिकली मींस दैट व्हाट गवर्नमेंट इज अर्निंग एंड व्हाट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग. वो जो गैप होता है जो गवर्नमेंट बोरो करती है मार्केट से, द फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, which is a very important measure, has been consistently declining. Correct. And this is a very, very strong signal that the government is sending to investors that we are not going to earn growth by spending our way and by borrowing from the market. And from a bond market's perspective, this is a very important signal. So the bond market is hoping that the present government will continue and will win the election, and this fiscal prudent policy will continue going forward. अगर उसमें कुछ बदलाव आया और कोई नई गवर्नमेंट बाय स्मॉल चांस हैव कम टू द पावर, देन द बॉन्ड मार्केट विल हैव टू रीअसेस कि जो नई गवर्नमेंट आएगी उनकी फिस्कल पॉलिसी क्या होगी, बजट डेफिसिट कैसा रहेगा, उसका इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो दैट विल इंट्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ वोलेटिलिटी. Understood. So Dhawal, we understood what is the way forward in terms of how the government is looking at things. Now, I'm an investor. To me, the most important question is where and how should I invest my money? Now, I have different horizons. I need some money in the immediate. I also have enough which can keep lying in the fixed income deposits and give me returns over a period of time. So, how should I be investing given where we are today? So, Varun, इसमें दो तरीके के सॉल्यूशंस हो सकते हैं. अगर आपको पता है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, then it becomes very, very simple. जो टारगेट मैच्योरिटी बॉन्ड ETF एंड बॉन्ड इंडेक्स फंड्स है, उसमें से आप
कोई भी फंड जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन को मैच करता है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं और आप उसको इफ़ यू रिमेन इन्वेस्टेड टिल द मैच्योरिटी ऑफ द टारगेट मैच्योरिटी फंड, then your returns will be a little bit less volatile, or there is some sort of like a predictability of returns. बट अगर आपको पता नहीं है कि आपका कितने महीने का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो इन सच सिचुएशन आई थिंक बेस्ड ऑन द हिस्ट्री एंड द पास्ट रिटर्न वन शुड इन्वेस्ट इन फंड्स हुज एवरेज मैच्योरिटी इज बिटवीन 1 year and 3 years, बिकॉज उसमें आपको अक्रूवल भी मिल रहा है और प्राइस वॉलेटिलिटी कम रहता है. तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टर्म्स समझाइए. पहला तो व्हाट इज़ टारगेट मैच्योरिटी, द सेकंड इज़ व्हाट इज़ ड्यूरेशन. तो ये दो टर्म्स थोड़ा सा समझाइए सो दैट एज एन इन्वेस्टर आई कैन मेक और माई लाइफ बिकम्स ईजियर टू टेक दैट डिसीजन. So target maturity should be viewed like if your fixed deposit, as the name target and maturity are there. So in target maturity fund, the fund has a specific maturity date, on which date the fund will cease to exist and all the earnings will be distributed to clients in a proportionate manner. और वो फंड्स में क्या होता है कि all the assets, underlying assets are maturing on or before the target maturity date of the scheme. So suppose आप एक 5 साल का फंड लेते हैं, आज की तारीख है अपनी 24 अप्रैल 2024, तो 5 साल का फंड मैच्योर करेगा 24 अप्रैल 2029 और ऑल द इन्वेस्टमेंट इन दैट स्कीम विल मैच्योर ऑन और बिफोर दैट. सो उसकी अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसका जो फंड में जो रिटर्न्स आएंगे, देयर इज अ प्रिडिक्टेबिलिटी, सर्टेन लेवल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, बिकॉज ऑल द इन्वेस्टमेंट्स आर मैच्योरिंग. करेक्ट. वेयरएज अगर आपको पता नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए है या 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, तो फिर आपको एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो परपेचुअल चलता रहे, लेकिन उसका एवरेज मैच्योरिटी, वेटेड एवरेज मैच्योरिटी, जिसमें ऑल द इंस्ट्रूमेंट जो मैच्योर कर रहे हैं वो बिटवीन 1 year and 3 years हो. And traditionally those kind of funds which are classified under short term income fund category, they keep their average maturity between 1 year and 3 year, and they invest in variety of government securities, T-bills and corporate bonds of high quality. Their earnings, that is the accrual, that means the coupon that you are going to get every year, is very attractive, plus उसमें जो price volatility होता है because of the change in interest rate cycle, that is limited. So those kind of funds do very well. Now for very savvy investors, those who know the market very well, they normally look at the interest rate cycle and then they take their calls. So आज की तारीख में interest rate cycle जिस तरह से हम लोग समझ रहे हैं, मार्केट को ऐसा लग रहा है कि 1 साल के या 1.5 साल के अंदर इंटरेस्ट रेट साइकिल इज गोइंग टू ट्रेंड लोअर. करेक्ट. एंड इन सच सिचुएशन इन्वेस्टर्स टेंड टू इन्वेस्ट इन द हाईएस्ट लॉन्गर ड्यूरेशन, लॉन्गर एवरेज मैच्योरिटी फंड्स, जहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल कट होती है तो पोटेंशियल प्राइस एप्रिसिएशन ज़्यादा रहता है. सो टारगेट मैच्योरिटी इज बेसिकली आप एक पीरियड है, उस पीरियड के अंदर द फंड विल मैच्योर. सो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स आर ऑल द वे फ्रॉम 3 years, कि आपको अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए एक फंड है जो एग्जैक्टली 3 साल बाद मैच्योर हो जाएगा एंड इन्वेस्टर्स कैन गेट देयर मनी बैक, एंड ऑल द वे टू अबाउट 15 years ऑफ मैच्योरिटी. तो इफ़ यू हैव मनी दैट यू डोंट नीड फॉर 15 years, यू कैन इन्वेस्ट इन अ 15-year फंड एंड इट विल मैच्योर आफ्टर 15 years. एंड जैसा आपने बताया धवल, दैट इन्वेस्टर्स हु हैव अ व्यू दैट इंटरेस्ट रेट्स विल कम डाउन, they should invest in the longer maturity or longer duration. Can you just explain this a little more for investors who are not very savvy on how does this work? Sure, Varun. So जो बॉन्ड मार्केट का जो इंट्रिकसी है कि जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं, बॉन्ड प्राइसेस गो अप, दे आर इन्वर्सली रिलेटेड. सो एंड जो प्राइस चेंज होता है, वो जो बॉन्ड का मैच्योरिटी जितना लंबा होता है उतना प्राइस चेंज उतना ज़्यादा रहता है, इम्पैक्ट उतना ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है. सो फॉर एग्जांपल अगर आप 1 साल का बॉन्ड लेते हैं और अगर इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट कम होता है जी, तो वो 1 साल के बॉन्ड का प्राइस होगा 25 पैसा ऊपर जाएगा. बट अगर वही चेंज आप 5 साल के बॉन्ड में देखते हैं तो उसमें फॉर एवरी 25 बेसिस पॉइंट डिक्लाइन द प्राइस, पॉजिटिव प्राइस इम्पैक्ट इज 3 to 4 times हायर. अंडरस्टूड. सो जनरली साइकोलॉजी क्या कहती है एंड बॉन्ड मैथमेटिक्स कि अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे ट्रेंड की तरफ ट्रेंड कर रही है, देन यू शुड इन्वेस्ट इन द लॉन्गेस्ट मैच्योरिटी बॉन्ड्स टू बेनिफिट फ्रॉम अ पोटेंशियल हायर प्राइस अप्रिसिएशन. Even if I don't have, if I have a view that I need money after 5 years
and I am seeing that interest rates are on a downward trend, I can still invest in a 15-year paper? You could, but ideally you shouldn't. Okay, understood. Ideally, the target maturity funds are basically fill it, shut it and forget it kind of funds. Correct. So over there, ideally for investors' own benefit and have predictability perspective, they should match the duration or the weighted average residual life of the fund with their investment horizon. आप 5 साल का इन्वेस्टमेंट और 15 साल के फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर बीच में कुछ ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ गई अनएक्सपेक्टेड, then you will have outcome which are not in to your liking. Okay, so let me ask you a very fundamental question. In fact, my father keeps asking me this question. How is target maturity different from a bank FD? And also, since you mentioned that interest rates, there is a very high probability that in the next 1 year to 2 years, interest rates would come down. Do you think it will also happen in bank FDs? के bank FDs के rates भी कम होंगे from the level they are today? See, we are in a very peculiar situation, Varun. Last 1-2 साल में हम लोगों ने देखा है कि as the economic growth is picking up, the credit growth is surpassing deposit growth. तो आप एब्सोल्यूट अमाउंट से आप देखेंगे तो जो बैंकिंग सिस्टम का जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है एवरी ईयर, इट इज़ वे अबोव द डिपॉजिट अक्रीशन दैट द बैंकिंग सिस्टम इज अर्निंग एवरी ईयर. सो उसकी वजह से थोड़ा मारामारी हो रहा है बैंक्स के बीच में इन ऑर्डर टू गार्नर मोर रिसोर्सेज सो दैट दे कैन जनरेट हायर लेवल ऑफ क्रेडिट. तो लास्ट 2 to 3 months वी आर नोटिसिंग दैट banks have started raising the deposit rates which have been way below. Yes. And now in certain cases government bonds are yielding higher than certain deposit levels. So in my anticipation there will be some upward pressure on deposits that banks offer just to ensure that there is a sufficient gap between the government's level of government bonds level and the deposit level. Coming to the first question, Dhawal, how is target maturity different compared to FDs? Sorry, I missed that question. So target maturity fund normally offers slightly better return. Deposits also offer you the return that is written on that. The difference earlier used to be in tax treatment of the target maturity fund, which has now been withdrawn. So if you have invested in the target maturity fund prior to 31st March 2023, then there is a very juicy tax benefit that you will earn you would have earned by investing in the target maturity fund. Now, if you are investing in target maturity fund, you have to only look at the tenure of the fund, what is the underlying YTM, underlying instruments, and compare that with the similar maturity bank deposits. And then take a call, because both of them are going to give you similar kind of return, very high level of liquidity and safety of the investments. Understood. So more or less they're pretty similar, but you have to look at what the underlying portfolio is and you have to look at who is giving you a higher return. Yeah. Plus the quality of the portfolio and diversification. See, the target Exactly. maturity fund portfolios are very highly diversified, whereas what we are observing is that right now a lot of investors are looking at various banks and their deposit rates, and there is some amount of deposit shopping which is taking place. So let me ask you one controversial question. क्या fixed income सही है? बिल्कुल. I think we are very, very bullish on retailization of the fixed income. We have seen the benefit of retailization of the equity market through SIP. In last 3 to 4 years, there has been a quantum jump in the amount of money that retail investors have invested in equity markets, either directly through SIP, and have benefited immensely because of the positive returns that the markets have generated. Now we are also looking for similar kind of miracle to take place in fixed income market as well. Yeah. Because financialization of savings is very, very important. And आज की तारीख में जो बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टर्स है, दे आर प्रिडोमिनेटली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. That's correct. अभी रेगुलेटर भी कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है. वन ऑफ द थिंग्स दैट द रेगुलेटर हैज डन इज दैट they have reduced the face value of the bond from 10 lakh rupees to 2 lakh rupees. That means अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो आप
बॉन्ड्स के प्राइवेट प्लेसमेंट या पब्लिक इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. पहले दैट अमाउंट वाज 10 lakh rupees. So that has happened last 2 years, and we are seeing marked improvement in the appetite of retail investors in buying bonds directly from any kind of online bond platform or on the exchange. So this retailization has already started taking place. Now we just have to ensure that this money starts flowing into mutual funds. Correct. Because mutual fund, as we know, is a sahi hai. There are professional fund managers looking after the portfolio. There is a benefit of diversification, benefit of liquidity, and when you redeem, the money comes straight into your bank account on T+1. Nothing could be better than that. Understood. So आपने हमारे एक्सपर्ट को सुना. To summarize everything, what he's mentioned is that we are in this era where we feel that interest rates would probably come down a little bit, but still there is enough for investors to look forward to and invest in fixed income instruments which are relatively very, very stable from a long term standpoint. In fact, what my two key takeaways from this conversation are कि फिक्स्ड इनकम को एक पोर्टफोलियो का अच्छा पार्ट बनना चाहिए, एंड द सेकंड वन इज यू हैव इनफ इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जहाँ पे आप 3 साल के लिए पैसा डाल सकते हैं, 5 साल के लिए पैसा डाल सकते हैं, या उससे बियॉन्ड भी पैसा डाल सकते हैं. I hope you liked this coverage that we did on fixed income, and we will continue to bring you more content as we go along. Thank you. Subscribe to our YouTube channel, Edelweiss Mutual Fund, and click on the bell icon for notifications. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.